Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Friday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goel. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहेंगे बाजार विशेषज्ञ पुनीत जैन। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ राजेश। Key domestic indices close at a new all-time high. Sensex finishes above the 66,000 mark. Nifty settles above 19,500 level. Wholesale price index is minus 4.12% for the month of June 2023. And India's overall exports in June 2023 estimated to be at $60.09 billion. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांक नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर दर्ज, सेंसेक्स 66,000 के स्तर के पार और निफ्टी 19,500 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जून महीने के दौरान गिरावट से नकारात्मक 4.1% दर्ज हुई और जून 2023 के दौरान भारत का सकल निर्यात अनुमानित 60 अरब 9 करोड़ डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। वैश्विक बाजारों के मजबूत संकेतों से घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी का दौर रहा और घरेलू शेयर सूचकांक अब तक के सबसे ऊंचे रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज हुए। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.8% के उछाल से 502 अंक बढ़कर 66,061 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स पहली बार 66,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.8% की तेजी से 151 अंक बढ़कर 19,565 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी पहली बार 19,500 के स्तर से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.1% की बढ़त दर्ज हुई। Key domestic indices today closed at a new all-time high amid positive cues from global share markets. The Sensex at the Bombay Stock Exchange breached the 66,000 mark for the first time ever, while the Nifty at the National Stock Exchange crossed the lifetime high of 19,500 level. The Sensex surged 502 points or 0.77% to end at 66,061. The Nifty jumped 151 points or 0.78% to finish at 19,565. In the broader market at the BSE, the mid-cap index surged by 1% and the small-cap index rose by 1.14%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 18 firms appreciated while 12 depreciated. Among the top gainers, TCS inched up 5.1%, followed by Infosys, which claimed 4.5%. Infosys gained 4.4%. On the other hand, Mahindra & Mahindra and Power Grid both declined 1.3% each. Titan fell 1%. In sectoral indices at BSE, 17 sectors logged gains while 3 witnessed losses. IT sector surged 4.3%, tech index jumped 3.7% and metal rose 1.4%. On the other hand, consumer durable index declined 0.3%. Power and utilities, both sectors fell 0.1% each. The overall market breadth was negative as shares of 2,123 companies rose while 1,298 fell. A total of 146 shares remained unchanged. अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 82 रुपये 17 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक 99.92 के स्तर पर दर्ज हुआ। और कार्यक्रम में चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं बाजार विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome, Puneet. Thank you.
पुनीत, किस तरह से देखेंगे शेयर बाजार की जो चाल है वो निश्चित तौर पे कितनी उत्साहजनक है, लेकिन साथ ही साथ ये जानना भी जरूरी होगा कि ये जो दौर है ये कितना स्थायी है। क्या इसमें कहीं किसी तरीके के हमको चौंकाने वाले या कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहने की जरूरत है? बिल्कुल अमित, आपने जैसे कहा कि एक तो जो बाजार की जो बढ़त है और जो रैली है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि अभी भी काफी इकोनॉमिक लेवल पर अगर हम देखें तो काफी चिंताएं हैं। अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट्स की मुहिम जारी है और अभी लगता है कि वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। जो इकोनॉमिक डेटा है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो पर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में काफी बड़ी तेजी चल रही है और करीब करीब आप देखें तो दुनिया के जितने भी बड़े स्टॉक मार्केट हैं वो अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर हैं। इंडिया का बाजार भी, इवन यूएस में, सिवाय चाइना को छोड़कर, मतलब चाइना में एक स्टॉक मार्केट में कोई रैली नहीं है, पर बाकी सभी बड़े बाजारों में रैली है। मुझे लगता है कि निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि डेफिनेटली जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स जिसे हम कहते हैं, प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स देखें या हम दूसरी प्राइस टू बुक वैल्यू, जो दूसरे तरीके हैं नापने के कि मार्केट वैल्यूएशंस क्या हैं, तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस काफी ऊंचे स्तर पर हैं और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, और उनको ज्यादा और जोश में आकर पैसा नहीं डालना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करना यहाँ पर काफी स्मार्ट चीज होगी for investors. Puneet, there has been a strong fund inflow, and in fact, if I have the figures correct, in the first half of 2023, 86,256 crore worth of equities has been bought by the foreign fund through the foreign fund inflows. How sustainable is this? What needs to be done so that we keep the interest of the foreign investors intact? So you're right. I mean, we have seen very strong inflows from foreign investors in the last 6 months, and the figure is close to 1 lakh crore that you mentioned. Also, along with it, we have seen very strong fund flows from domestic investors. Retail investors who have participated in mutual funds, and also retail investors participating directly in the markets. So overall, if we see, this has been some kind of a Goldilocks situation where foreign investors also buying and domestic investors also buying. And in fact, I would say that this has fueled this kind of a sharp rally when nobody was expecting. In fact, you will notice that this is a rally which was completely unexpected by so-called experts, because most fund houses and research houses has anticipated that 2023 will be a muted year, will not be a year when the markets will go up, and at best they had expected the market to consolidate. On the contrary, in fact, the stock markets have gone up, and like I said, to some extent driven by strong liquidity that you mentioned, and also I think the valuations are being bid higher by investors. Which is good for long term for the economy, because of course if I'm a long term investor, I'm not trading in the market, I'm not buying and selling shares every day. I'm happy that the market valuations keep going higher, and that brings me money. So I think if you look at investors who are long term, people who invest in SIPs or who are gradually investing in the markets, it is good. However, some investors have this tendency to make quick gains, so they step into the market and the markets are going higher, and they commit large amount of funds. I think we need to be cautious of that aspect. As far as long-term attractiveness on the Indian markets are concerned for investors, I think that is now well etched, I would say, in market history. Because if you see the performance of Indian market vis-a-vis any other emerging market, be it China, be it Hong Kong, South Korea, Taiwan, all the emerging markets we have beaten by a long margin. I think, of course, China plus one strategy, where big fund houses are diversifying out of China and they're investing in other economies, and primarily into economies like India. I think that is going to continue for quite some time. So if you ask me long term, definitely fund flows in India will continue as long as the path of economic reform and the growth that we have charted out in recent years, that continues. Short term, of course, there will be some volatility. And so I wouldn't be sanguine about the short term in terms of volatility, but I would say yes, long term we are already pretty well placed.
पुनीत, आपने अभी कहा कि दो तरीके हैं। बाजार में अभी भी लिक्विडिटी काफी बड़ी मात्रा में बनी हुई है, जिसकी भी एक वजह यह है जो तेजी आ रही है। तो ये तेजी कितनी स्थायी है आपके नजरिए से? और जो दूसरी बात अभी आपने हमारे निवेशकों के लिए भी कही कि जो एक स्मार्ट या एक सतर्क निवेशक है, उसको ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए और अपने शेयरों में कहीं न कहीं मुनाफा वसूली भी करनी चाहिए। तो ऐसे कौन से क्षेत्र आप सजेस्ट करते हैं कि जिन क्षेत्रों में मुनाफा वसूली करनी चाहिए, और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें ऐसे दौर में भी निरंतर निवेश अपना बना के रखना चाहिए? देखिए अमित, हम जो देख रहे हैं कि यदि हम फंडामेंटल परफॉर्मेंस देखते हैं किसी सेक्टर की और उसकी वैल्यूएशन देखते हैं, तो मुझे लगता है कि पीछे दिनों में जो काफी बड़ी रैली आई, कुछ जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स हमने देखे, वहां पर उतना ग्रोथ नहीं आया नंबर्स में। एनबीएफसी के स्टॉक्स थे, वहां हमने बहुत तेजी देखी। इवन मैं कहूंगा कुछ हद तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्योंकि आप सब बहुत अच्छा लगता है हमें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर स्टॉक से बढ़ते हैं, वो एक काफी स्ट्रांग इकोनॉमिक सेक्टर है। लेकिन यदि नंबर्स देखें आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो वहां पर नंबर्स कोई बहुत ज्यादा बढ़कर नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स में हमने बहुत तेजी देखी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पिछले 3-4 महीनों में पर्टिकुलरली एनबीएफसी स्टॉक्स हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, वहां पर बहुत बड़ी तेजी अगर आई है तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। वो क्षेत्र मुझे लगता है करेक्शन होगी। इवन आप सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि जो आईटी सेक्टर स्टॉक जो आज बहुत तेजी से बढ़े, करीब 5% आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स था उसमें तेजी आई। बड़े बड़े शेयर्स टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये सभी में हमने बहुत बड़ी तेजी देखी। मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा फंडामेंटल्स के अहेड है, क्योंकि अगर नंबर्स देखें, टीसीएस के, एचसीएल टेक के नंबर्स हमारे अनाउंस हुए थे पिछले दिनों, नंबर्स देखें तो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स नहीं है। हालांकि कंपनीज ने ये उम्मीद जाहिर करी है कि वो आगे जाकर उनके नंबर्स इंप्रूव होंगे, लेकिन फिलहाल जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं वो बहुत ज्यादा एनकरेज करने वाली नहीं है। डेफिनेटली 5% जो इंक्रीज देखा वो सरप्राइजिंग है मेरे लिए। तो मुझे लगता है वहां भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग होना एक पॉसिबिलिटी है। So, Puneet, you mentioned IT companies a while back and they jumped 4.45%. Is the possibility of pause in the Fed rate hike also a contributor, despite the fact there has been, as you mentioned, tepid earnings report from TCS, Wipro, HCL, etc.? See, interestingly, I'll give an example. Let's look at what happened in USA yesterday, and then we'll take up Indian example. Okay. See, in US, Google, which is one of the tech leaders, very well known name, and it's a giant company. $1.6 trillion is the market capitalization of Google. Now they integrated their chatbot, their artificial AI tool with the search engine. And the stock went up by 4%. A $1.6 trillion company gained 4%, mainly because of a technological thing. There is nothing, it's not going to add to the revenues in the short term. And I think that fancy that is really catching on. And similarly, in India, if you see, I would say there was no justification at all for a 5% kind of a jump in IT stocks, given the numbers that we have seen. I don't know if the market is looking ahead to the next 1 year or 2 year earnings, but if you ask me, they haven't also guided for very high growth. They are looking at single-digit growth over the next 1 year, and there are margin pressures on there, and the margins have actually gone down if you see the numbers. So when I find that these stocks have gone up by, they're all fundamentally strong companies, definitely good companies to keep in the long term. But if you ask me why the stocks went up by 4-5% across the sector, I'm surprised. I find a bit overreaction, to the situation. But what about the Fed rate hike? The pause in it. So pause. See, so we have a Fed. Oh, I should say likely pause in it. So on 26th we'll see. I'm sure we're going to see another rate hike on 26th July. And possibly in September also, because the Fed's aim to bring down inflation on a sustained basis, that is not being fulfilled. So I think going ahead, we will see those kind of events. I point out what is happening actually in the market. A lot of people have see in February, the markets were actually not doing well. Markets were quite low, and then
banks started failing in USA, and the Fed stepped in with $100 billion of liquidity infusion in US to save the banks. I think this is you will see that the globally turned around from end of March, from April onwards, and last 3-4 months is huge. Because of that infusion, sudden infusion of $100 billion of liquidity in the system, which has really fueled this rally. So to some extent, if you ask me, I find it a bit speculative, and that is one of the reasons why I'm cautious. I'll say some profit booking at these levels will be smart to do. पुनीत, आपने अभी जैसे कहा कि बाजार में लिक्विडिटी बहुत है, तो ये लिक्विडिटी की वजह क्या है? हालांकि हमारे पास जो WPI इंडेक्स के भी जो आंकड़े हैं उसमें भी ये बात हो रही है कि हमारा जो मुद्रास्फीति है थोक मूल्य पर आधारित खास तौर पर वो नकारात्मक है, तकरीबन 4% से भी नीचे है। ऐसे दौर में अब हम ब्याज दरों में जब हम राहत की उम्मीदें अभी भी नहीं देख पा रहे, जिस तरह से आपने भी कहा था कि तीसरी तिमाही से पहले ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद करना भी शायद बेईमानी होगा, फिर हम कहां से जो लिक्विडिटी है उसको कहां खपा रहे हैं? या ये कहीं ना कहीं इसमें भी ये सिर्फ एक सेंटिमेंटल जंप आ रहा है बाजारों में और इसमें भी बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है? देखिए, लिक्विडिटी तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम ग्लोबल सिस्टम में देखें तो जब बैंक फेलियर्स शुरू हुए मार्च में, तो अमेरिका ने जितनी लिक्विडिटी पिछले एक साल में निकाली थी सिस्टम से उतनी इंफ्यूज कर दी थी एक मंथ में। तो लिक्विडिटी वो काफी बड़े पैमाने पर अभी सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है और उसी से आप देखें तो वहां पर पैसे बढ़े। उसी लिक्विडिटी के चलते आप देखेंगे कि इंडिया में यदि हम FII बाइंग की बात करें तो 1 लाख करोड़ के करीब की फिगर, नेट फिगर जो है वो FIIs ने भारत में डाली है स्टॉक्स खरीदने मिले, तो वो भी एक लिक्विडिटी इंफ्यूजन है सिस्टम में। देखिए, तो इस प्रकार से, और बल्कि उसके साथ ही हम FDI के अगर फिगर्स देखते हैं, दूसरे हम फिगर्स देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लिक्विडिटी कुल मिलाकर जो सिस्टम में जो लिक्विडिटी है वो काफी स्ट्रांग है। RBI का अभी तक जो स्ट्रेटेजी थी कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे लेकिन लिक्विडिटी को कम नहीं किया RBI ने, और मुझे लगता है कि RBI वांट्स टू कीप लिक्विडिटी हाई बिकॉज उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है भारत की वो उनकी प्रायोरिटी है और चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बनी रहे, उसके लिए लिक्विडिटी होना जरूरी है। तो यही कारण है, अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी मार्केट में भी अक्रॉस इंडिया काफी बड़ी तेजी चल रही है। वो भी देखिए, एसेट प्राइसेस आर ऑल लिंक टू लिक्विडिटी अवेलेबल फंड्स, तो इसी तरह सभी एसेट प्राइसेस में अगर आप देखें, गोल्ड की बात करें हम। Yeah, Puneet, that's what I wanted to ask you about the realty index, which reached its highest level in 20 months, touching the 537 mark, a level which was last seen in October 2021. What's your take on the realty sector? So, clearly, again, I'll point out certain news items. In the last 10 days, we have seen very large projects being launched by some real estate companies, and most of these projects were all luxury projects, flats selling at more than 4 crore, 5 crore rupees, and all these projects got sold out within a matter of days. So clearly, the appetite for large property asset acquisition is still there. And that is what the market is reacting to. Market understands that these projects going forward will lead very good results. And more importantly, there is huge appetite for high value properties in major cities. So whether we look at Mumbai, we look at Delhi, we look at Bangalore, in all these big cities, there were major projects launched and they got sold out within a matter of days. So I think the whole asset price, I wouldn't call it bubble, but this price inflation is fueling these expectations. And realty sector, of course, is one of the sectors that has gained a lot in last 1 year. And we see that reflected in the stock price also now. नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर तेजी का दौर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.4%, हांगकांग का हैंगसेंग और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.3% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा। हालांकि जापान का निक्केई मामूली गिरावट से बंद हुआ। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में फ्रांस और लंदन के शेयर सूचकांकों में जहां 0.3% तक की बढ़त रही, वहीं जर्मनी का शेयर सूचकांक 0.3% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करता नजर आया।
U.S. stocks ended higher yesterday. The Nasdaq Composite climbed 1.6%, the S&P 500 index gained 0.9%, and the Dow Jones Industrial Average rose 0.1%. Puneet, the easing of inflation in the U.S. has kindled hope, and I've asked you before also, the U.S. Fed could pause rate hikes after July. Is the optimism shown by markets justified? Very briefly. So, markets are quite optimistic that, first of all, that the U.S. Fed hikes have not increased the fears of recession in USA. Earlier, there were expectations that the U.S. economy will go into recession. I think those fears have been consigned to dustbin for the present. Markets are reacting to that. On top of it, there is euphoria about IT sector stocks. You've seen what happened yesterday. And I think right now, the U.S. investors feel that the U.S. Fed will not push the economy into recession, which is good news. We don't want market economies to get hurt, but they need to get inflation under control, and that's going to be a tough task, I think. So pause is going to be a very tough call for US Fed after the July hike. अमेरिका में अगर मुद्रास्फीति के खतरे बरकरार हैं, लेकिन शायद भारत में आमतौर पर थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति पर राहत भरी खबर है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जून महीने के दौरान गिरावट से नकारात्मक 4.1% पर आ गई। मई 2023 के दौरान यह दर नकारात्मक 3.48% थी। खाद्य पदार्थ, खनिज तेल, धातुओं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के साथ साथ वस्त्र की कीमतों में कमी आने से मुद्रास्फीति की दर में और गिरावट दर्ज हुई है। पुनीत, किस तरह से आंकते हैं? मेरे ख्याल से लगभग ये लगातार तीसरा महीना है जब अगर WPI इंडेक्स की हम बात करते हैं, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की, तो उसमें नकारात्मकता दर्ज हुई है। क्या माना जाए, अगर इतना ही गिरावट है और वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसके क्या संकेत मानते हैं? क्या वजह है और क्या हमारा जो निवेश है वो नहीं बढ़ पा रहा, या कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि मुद्रास्फीति लगातार अगर थोक मूल्य पर आधारित जो है WPI, वो अगर नकारात्मक है। अमित, जो WPI नंबर्स हैं, ये होलसेल नंबर्स हैं, जैसे आपने मेंशन किया, और ये जो प्रोड्यूसर लेवल पर जो डिमांड है उसको दर्शाते हैं। और यदि WPI नेगेटिव है तो ऐसा लगता है कि वहां पर डिमांड सॉफ्ट है, यानी कंपनी फैक्ट्रीज के अंदर अभी डिमांड कम है। और दो तीन कंपोनेंट्स हैं WPI के, आप देखें जहां पर ज्यादा गिरावट आई है। एक तो फ्यूल प्राइसेस में गिरावट है, दूसरा मेटल प्राइसेस में, जो मेटल प्राइसेस हैं, स्टील है, कॉपर है, इन मेटल प्राइसेस में थोड़ा डिक्लाइन आया है। एक कारण तो डिमांड भारत में भी कम है, और दूसरा कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो प्राइसेस हैं वो भी काफी गिरावट आई है। तो WPI का कम होना कोई बहुत अच्छी खबर नहीं होती, क्योंकि वो डिमांड की डिस्ट्रक्शन या डिमांड की कमी को वो दर्शाता है। और हमने देखा है कि ये 8 वर्षों के बाद सबसे लोएस्ट लेवल है 4.12 का। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी को जरूरत है आगे कि वो डिमांड उस पर थोड़ी बढ़े और थोड़ा ग्रोथ उसके अंदर बरकरार रहे। Moving on, India's overall exports in June 2023 is estimated to be $60.09 billion. Trade deficit has improved by 28.26% during April to June 2023 to $22.59 billion from $31.49 billion in April to June 2022. Electronic goods export witnessed impressive growth of 47.1% in April to June 2023 respectively over corresponding period last year. Agricultural exports also registered robust growth. Spices rose by 18.2%, while exports of fruits and vegetables was up by 14.1%. And oilseeds were up by 25.1% in April-June 2023 over April-June 2022. Drugs and pharma export registered 5.10% growth in April to June 2023 respectively as compared to same period last year. Puneet, what does these export numbers indicate vis-a-vis the efforts that the government is making to invite people and manufacture here and made in India, etc., and other initiatives of the government to look at the electronic goods export, which has witnessed an impressive 47.1% growth in April to June? So clearly, government's efforts to push
manufacturing exports of India, they have been very impressive. In fact, if we just keep aside 1 month's numbers and we look at, let's say, the last 3-4 years, merchandise exports, because that is an important area of manufacturing, manufactured goods and merchandise exports, they have really gone up. This month, of course, we have $33 billion of merchandise exports and another $27 billion of services exports, which would include software services and other services. So overall, we have about $60 billion worth of exports. We have a deficit in merchandise exports, trade deficit. We have a surplus about $12 billion in services exports. So overall, I think India's export story is very strong. We must remember that globally right now, the demand for goods is very low. And an economy like China has seen a decline of 7% in their exports. So I think we need to keep the global context in mind. There is a certain softness in international markets right now, but I think their exports is very robust. Like you pointed out, government focused on electronics manufacturing and exports, and there we have done extremely well. Where we have suffered in last 1 month and why this is lower is because of exports has come down in gems and jewelry sector. I think those numbers are really hurting the overall numbers, but I think within the overall picture, we are doing very well. पुनीत, जो ट्रेड डेफिसिट है यानी व्यापार घाटा, उसमें 28% से अधिक की कमी आई है, ये कितना एक अच्छा संकेत आपकी नजर में है? नहीं, देखिए, बहुत हम इसको जो ट्रेड डेफिसिट है इसको ब्रिज करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी एक तो देखिए मुद्रा पे बहुत फर्क पड़ता है, जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के। हालांकि कोई भारत को कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कोई क्राइसिस नहीं है, हमारा $600 बिलियन के रिजर्व है, तो काफी स्ट्रांग है करेंसी, बट फिर भी ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी चीज है। और कंसिस्टेंट, और देखिए हम ला सकते हैं ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो हमने बात करी अभी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और जो इम्पोर्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो हम कम करें, वैल्यू एडेड इम्पोर्ट्स कम करें हम, और एक्सपोर्ट ज्यादा करें। और अगर आप देखें तो अगर अभी टाइम नहीं है हमारे पास, पर अगर मैं आपको सारे आंकड़े दूं तो हमने काफी प्रोग्रेस की है इस एरिया में इन द लास्ट 5-7 years. Moving on, the global crude oil prices were steady today. In intraday trade, Brent crude was trading at $81.25 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $76.75 per barrel when reports last came in. Quickly, Urals, which is supposed to be within the bracket of $60, and this is a rate set by Group of 7. If that is breached, then we are in trouble. You're right. So of course we have to export. The prices have to be below 60 to for us to import without any action from because of action cuts by Saudi Arabia. But overall we have done again very well, keeping the prices low. जी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 30 रुपए की बढ़त से 59,270 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर रहा। चांदी 225 रुपए की बढ़त से 75,550 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। Thank you for being with us, Puneet. And before we close the headlines once again, key domestic indices close at a new all-time high. Sensex finishes above 66,000 mark. Nifty settles above 19,500 level. Wholesale price index is minus 4.12% for the month of June. India's overall exports in June estimated to be $60.09 billion. That's all we have in this edition of Market Pantra. Till tomorrow, goodbye. Market Pantra. Market Pantra.